Prime Minister Narendra Modi is currently on a 3-day visit to South Africa to attend the 15th BRICS summit. Now, during this visit, he is expected to, of course, hold a meeting with his Chinese leader, Xi Jinping, which, of course, if it happens, would be the first time in 3 years that they are having such a meeting since Galwan. Notably, the relationship between India and China has been strained since the Galwan clashes of 2020. In fact, these are pictures that you saw about a couple of hours ago as the Prime Minister landed in Johannesburg, received there by the Indian community. Remember, this is the second time that the Prime Minister is going to South Africa. This summit, the BRICS summit, marks the first in-person gathering of BRICS leaders since 2019. Since COVID happened, they have not met physically so far. All eyes are on the Prime Minister and whether or not he will be holding talks with Chinese President Xi Jinping. Like I said, the Indian side has neither confirmed nor denied the possibility of such a meeting, whereas the Chinese ambassador to South Africa told reporters a few days ago that such a meeting was on the cards. But first the story, and then I'll go across to our guests. All right, two guests joining us as we also are counting down to the Prime Minister's speech. He will be speaking at the leaders' retreat any moment now. But Brahma Chelani, strategic affairs expert, is joining us, and Professor Victor Gao is Vice President of the Center for China and Globalization and the Professor Chair at the Soochow University. Professor Brahma Chelani, let me start with you first. Do you reckon that there will be these talks? And if there is, what may be the context? Why was it brought about? Because for 3 years, India has been holding off on having these talks because the status quo was changed unilaterally by China, the Galwan clashes happened, and that situation on the ground has still not been resolved. You raise a very valid question. The fact is that in the 5-year period before the Chinese border aggression in Ladakh in April-May 2020, Modi and Xi Jinping had met 18 times. If 18 meetings did not change Xi Jinping's mind, did not create a more friendly China, on the contrary, those 18 meetings that led to China's border aggression against India, would one meeting in Johannesburg, if it were to happen, if it doesn't happen in Johannesburg, it's likely to happen in New Delhi. But in either case, whether it happens in Johannesburg or in New Delhi, would a Modi-Xi Jinping meeting make any difference? More fundamentally, will it resolve the border crisis that has resulted from China's land grabs in Ladakh in April-May 2020? The Galwan Valley clashes of June 2020 were not the trigger point. They were the consequence of China's border aggression, land grabs of April and May 2020. The issue before China and India is whether they want to mend fences by resolving the border crisis. The border crisis can be resolved only if Xi Jinping is willing to climb down to some extent. After all, this crisis is of China's making. Is China willing to roll back its land grabs? Is it willing to restore status quo ante? Is it willing to do what is necessary to end the crisis, which is to sequentially disengage, de-escalate, and de-induct rival forces? That's the only way this crisis can end. So, Professor Victor Gao, what has changed on the ground is that you have multiple flashpoints where thousands of Indian and Chinese troops are camped in. There is every passing day the possibility of a flare-up like we saw in Galwan in June 2020. And Professor Chelani is right when he says that it's not India that changed the status quo, it is China that changed the status quo on the ground. Now, if you were to get back to a semblance of a normal relationship, as the foreign minister said, I mean, the relationship right now is not normal.
If you want to get back to a semblance of a normal relationship, then China has to go back to the status quo ante as it existed pre-April 2020. Is China willing to do that? First of all, when we talk about status ante, we need to know what we are talking about. Is it in 2020 or is it before 1962, for example? I've mentioned many times between China and India, there have never been territorial disputes in our thousands of years of history. The territorial disputes now we have were created by the British Indian colonists. And I don't think neither China nor India should be bound by the bad legacies left behind by the British, because they were there in India trying to expand into an imperialist framework, which ended up eventually in disasters. And India achieved its independence. And I think it is time for both China and India to use our wisdom to restore our thousands of years of peaceful coexistence. But and Professor Gao, to be I'm sorry, I'm interrupting. The British. It's rather amusing. It's been 70 plus years since the British left India and since China became the PRC. Are you telling me whatever you perceive as the historical wrongs that happened pre-1947 and pre-1949 were being corrected in 2020? Now, first of all, in the eastern section of our border, there was this McMahon line drawn up not by Indians, not by the Chinese, but by the British. Now, China has never and will never acknowledge the legality of the McMahon line. Therefore, both China and India need to use our own wisdom to sort out the disputes left behind by the British, and refusing to use the McMahon line as the starting point in our negotiations. In the Ladakh region, the circumstances are very different, but one thing is certain. For China and India, war is not an option, and confrontation is the dead end. Please join me in welcoming the Prime Minister. Excellencies, leaders of BRICS business community, my namaskar, good evening to you all. I am glad that immediately after arriving in South Africa, our very first engagement is the BRICS Business Forum. First and foremost, I thank President Ramaphosa for his invitation and for organizing this meeting. My heartiest congratulations and best wishes on the 10th anniversary of the BRICS Business Council. In the last 10 years, the BRICS Business Council has played a vital role in enhancing our economic cooperation. In 2009, when the first BRICS summit was held, the world was just. वर्तमान समय में भी कोविड महामारी तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों की एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं, उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बेसिक कोड के लागू होने से
इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिदृश्य बदल रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। निवेश और उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर में से एक है। हम भारत को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। स्वाभाविक है कि इससे भारत में रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मार्केट बनेगा। आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में इस समय 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न है। आईटी, टेलीकॉम, फिनटेक, एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का सामान्य जन के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की आय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। आईटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही है। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोविड महामारी ने हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर ब्रिक्स बिजनेस जगत के लीडर्स को उनके योगदान के लिए बधाई देता हूं। इस मीटिंग के शानदार आयोजन के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति रामाफोसा का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।